Hey there. So once again, welcome back. And in this video, we're gonna cover the chapter 2, that is attention. We're gonna look after the question answer, and through question answer, I'm gonna complete this chapter. So this question answer are very important, and I really want you to watch this video. And this is chapter 2, and the question answer video of chapter number 1, it would be soon uploaded, but let's focus here. Chapter number 2, that is attention. What is attention, and about the attention, what does mean, and everything. And this will be the detailed explanation video with the important question answer. So the first thing is we're gonna know the checklist of this chapter, that what topics we're gonna study. So the first is attention processes. Under this, we're gonna read about the selective and sustained attention. Okay, let's we start from the beginning. That is, first definition of attention, what are its nature, determination, and we're gonna know about the types of attention. Under that, there are four types of attention, but firstly we're going to look about the two types of attention, that is selective and sustained attention, then natural conduction and synaptic transmission, structure and functioning of the brain, endocrine glands and their effects. Okay, they are under these heads. There are many topics also, and the topic which would be different, which would be not in this like question answer video, it would be covered later, the other topic which are left. So let me start with the question number 1, that is the long answer questions. It would be of like 20 marks, and under this question you have to write like 4 pages and around 400 words, 20 marks. Okay, so let's begin. What is attention? Describe method of attention. Also give its nature and determinations. Okay. So what is attention? Attention का मतलब क्या होता है? So attention is the ability to actively process specific information in the environment while turning out other details. Attention is limited in terms of both capacity and duration. So it is important to have ways to effectively manage the attentional resources we have available in order to make sense of the world. I'm going to explain in a very brief and a very easy language what it's saying. So यहाँ पे ये कह रहा है कि अटेंशन एक एबिलिटी होती है, ये एक मेंटल प्रोसेस होता है, एंड ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस भी होता है. सो अटेंशन इज़ अ प्रोसेस या फिर एक एबिलिटी होती है टू एक्टिवली प्रोसेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो हमारे एनवायरनमेंट में है उस पर फोकस करना, वाइल ट्यूनिंग आउट अदर डिटेल्स. इट्स ट्यूनिंग आउट अदर डिटेल्स मतलब बाकी डिटेल्स को नेगलेक्ट, इग्नोर करते हुए एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना, दैट इज़ द अटेंशन. सो अटेंशन इज़ द एबिलिटी टू एक्टिवली प्रोसेस. ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है जहाँ पे आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अडेप्ट करते हो, सॉरी नॉट अडेप्ट, आप फोकस करते हो. सो अटेंशन इज़ द एबिलिटी टू एक्टिवली प्रोसेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द इन्वायरमेंट वाइल ट्यूनिंग आउट अदर डिटेल्स. बाकी चीज़ों को हटा के आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आप फोकस करते हो, दैट इज़ द अटेंशन. अटेंशन इज़ लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ बोथ कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन. सो अटेंशन जो होता है, दैट इज़ अटेंशन इज़ लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ बोथ कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन. इसकी कैपेसिटी भी छोटी होती है एंड ड्यूरेशन बहुत स्मॉल होता है. लाइक आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हो एंड देन सडनली समवन पासेस अवे फ्रॉम द डोर एंड आपका एक सेकेंड का अटेंशन जो है कि ओके समवन पास, देन यू अगेन फोकस्ड ऑन योर लेक्चर. सो दैट इज़ द अटेंशन. इसीलिए अटेंशन होता है वो लिमिटेड होता है इन टर्म्स ऑफ बोथ कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन. So it is important to have ways to effectively manage the attentional resources we have available
we have available in order to make sense of the world. अगर आप इसीलिए कहते हैं ना वी शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, अगर हम पढ़ाई करते वक्त वी शुड ऑलवेज स्टडी. सो अटेंशन इज लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ बोथ कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव वेज टू इफेक्टिवली मैनेज द. सो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट टू हैव वेज, राइट, यहाँ पे आपको कि कैसे आप इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सके उस अटेंशनल रिसोर्सेज को जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड. अगर आप ऐसे चीज़ों को अटेंशन दे रहे हो जिसका कोई यूज़ मतलब नहीं है, सो इट डजेंट मेक द सेंस. अगर आप रोड पे जा रहे हो एंड इट समवन इज़ राइडिंग द बाइक, आप उसी पे अटेंशन दे रहे हो अपना काम छोड़ के, then it doesn't make sense for you as well as the world कि आपको काम पे जाना है and you're focusing and standing one at the time, एक जगह बैठ के आप सिर्फ कार को जाते आते देख रहे हो. that doesn't make sense. आपने अपने attentional resources को अच्छे से यूज़ नहीं किया, उसे एक ऑर्डर में नहीं यूज़ किया, राइट, जो कि एक जो कि सेंस नहीं बनाता है, राइट. सो यहाँ पे है अटेंशन इज़ द बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली कंसंट्रेटिंग ऑन अ डिस्क्रीट एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन whether considered subjective or objective while ignoring other perceivable information. It is a state of arousal. यहाँ पे एक definition दी गई है that attention is the behavioral and cognitive process of selectively concentrating on discrete aspects of information. What does it mean? कि यहाँ इसका क्या कहना चाह रहा है कि अटेंशन एक बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस है. किसका प्रोसेस है? सेलेक्टिवली कॉन्सेंट्रेटिंग. आप सेलेक्ट करके चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, आप हर चीज़ों को अटेंशन नहीं देते हो, राइट. इफ़ यू आर स्टडिंग यू आर सेलेक्टिव कि हमें लेक्चरर को सुनना है, ना कि हमें लोगों को आते जाते देखना है, राइट. आप सेलेक्टिवली कंसंट्रेट ऑन अ डिस्क्रीट एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर कंसिडर्ड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. चाहे वो सब्जेक्टिव हो सकता है पर्टिकुलर या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, राइट. दैट इज़ आप हर चीज़ों को कर रहे हो while ignoring other perceivable information. It is a state of arousal. यहाँ पे ये कह रहा है कि आप सारी अदर चीज़ों को आप इग्नोर करते हो, वो सब भी आपके ध्यान में आ रही होंगी, वो सब भी आपके अटेंशन में आ रही होंगी, आपके फोकस में आ रही होंगी, बट यू आर इग्नोरिंग दैट, राइट. सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ अराउजल. नाउ अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स व्हाट इज़ अटेंशन, what he defines कि अटेंशन क्या होती है. So everyone knows what attention is. It is the taking possession of by the mind in clear and vivid form of one out of what seems several simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration over here, consciousness are of its essence, right. सो वॉट आई डिड दिस कि जो वो वाली PDF थी दैट वॉज सो इट वॉज सो दैट वॉजन ईजियर टू अंडरस्टैंड, राइट. वो वर्ड्स काफ़ी ट्रिकी नहीं थे, दैट वॉज कि वो अब समझ नहीं पाते इन ईजी गोइंग लैंग्वेज. सो आई थॉट दिस PDF वुड बी द बेटर फॉर यू टू नो कि अटेंशन है क्या. सो उस बेसिकली उस क्वेश्चन में ये था, उसने पूछा था कि अटेंशन क्या होता है एंड देन यू हैव टू टेल द मेथड्स ऑफ अटेंशन. सो पहले यहाँ से अटेंशन देख लेते हैं कि अटेंशन है क्या. सो अटेंशन इज़ द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली कंसंट्रेट. सो अटेंशन, ओके आई एम गोइंग टू रिपीट अगैन. सो दैट जो डिफिनेशन हमने बताया यू कैन ऑल्सो लर्न दैट ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो. So attention is the cognitive process of selectively concentrating on specific stimuli while ignoring others. Attention एक cognitive process है of selectively concentrating. आप किसी specific stimuli पे concentrate करते हो while ignoring others. It's essential for learning. ये किस लिए essential होता है? For learning, decision making, everyday task. एंड ऑल्सो वी आर बम्बार्डेड विद इन्फॉर्मेशन. हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ बम्बार्डेड होते हैं, मतलब कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस रहते हैं एंड अटेंशन हेल्प्स अस टू मैनेज दिस ओवरलोड, अलाउिंग अस टू फोकस ऑन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, सो इट्स वेरी इजी कि अटेंशन एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, सेलेक्टिवली कंसंट्रेट. नाउ वी हैव
Historical perspectives of attention. So first is by William James, 1819. He gave the definition that attention. He defined attention as the taking possession by the mind in clear and vivid form of one out of what seems several simultaneously possible objects or trains of thought. The second is by um, the first is by William James. Second is by Donald Broadbent. इनकी theory we will study. So let's see this. Proposed the filter theory suggesting that our attention acts like a filter, selecting specific information for further processing, right? And the third one is of Annie Treisman. So she said she developed the attenuation theory, okay, which proposed that unattended information is not completely blocked but rather weakened or attenuated, right? So these three are very important, these three person. So make sure you write this in your exam. And also that जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज अटेंशन, डिस्क्राइब मेथड ऑफ अटेंशन, like I've discussed in the previous PDF, that instead of writing that whole para you can also write, and you can also write these two. And because words are very typical, right? So you won't be able to get it. So I thought this is the easiest way, and it is the most important and easy paragraph. The words are very easy to understand also. So yeah, remember the William James, okay, and Donald Broadbent, 1958, Annie Trisman, 1960. Write the name with the date also. So now in the next topic was like attention हो गया, historical perspective लिख दो, and the next is types of attention. Okay, so let's back to that PDF. Key types of attention. So टाइप्स ऑफ अटेंशन में देखेंगे कितने टाइप्स के अटेंशन होते हैं. सो क्लासिफिकेशन ऑफ अटेंशन बाय रॉस. रॉस एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अटेंशन के क्लासिफिकेशन को दिया है. अकॉर्डिंग टू रॉस, अटेंशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन वोलिशनल यानी कि इनवॉलंटरी अटेंशन, एंड द नेक्स्ट इज वोलिशनल यानी वॉलंटरी अटेंशन. सो नॉन वोलेशनल क्या होता है या फिर इनवॉलंटरी वो क्या होता है, विल डिस्कस दैट. सो दिस टाइप ऑफ अटेंशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी रूल ऑफ विल. यहाँ पे विल का कोई रूल नहीं होता है कि हमारा मन नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे, मन है तो करेंगे. यहाँ पे आपको करना ही करना है. यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट. इंस्टेड इट इज़ अराउज्ड ईदर बाय इंस्टिंक्ट एंड हैंस कॉल्ड इन्फोर्स्ड अटेंशन, राइट. इसे इन्फोर्स्ड अटेंशन कहते हैं और इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर सेंटिमेंट्स एंड देयरफॉर कॉल्ड स्पोटेनियस नॉन वोलेशनल अटेंशन भी कहा जाता है. एग्जाम्पल इसके क्या होंगे कि अटेंशन कुड बी अटेंशन पेड टू द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन जेंडर और अ मदर्स अटेंशन ऑन नोटिसिंग हर क्राइंग चाइल्ड. तो यहाँ पे आप लाइक अगर अपोजिट जेंडर, इफ यू रियली लाइक और एडमायर हिम और हर, देन यू वुड ऑटोमेटिकली यू वुड पे अटेंशन, राइट. इफ़ द मदर्स, अगर एक माँ है उनका बच्चा रो रहा है, देन शी ऑब्वियस सी बात है शी वुड गिव अटेंशन टू हर. The next is volitional or voluntary attention. So volitional attention exercises the will and demands our conscious effort for arriving solution or achieving certain goals. यहाँ पे क्या बता रहा है कि हम लोग जो हमारे अटेंशन, हम लोग किसको अटेंशन देते हैं, किस पे फोकस और कंसंट्रेट करते हैं, जिस पे हमारा मन होता है, जो हमारा डिमांड करता है, जो हमारा दिल करता है, उस पर हम लोग अटेंशन करते हैं. लाइक इफ़ समवन इज़ पासिंग, अगर आप कहीं जा रहे हो एंड यू सॉ अ शॉप ऑफ आइसक्रीम, तो ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा खाने का एंड यू वुड गिव अटेंशन टू दैट. सो वोल्यूशनल अटेंशन एक्सरसाइजेज द विल एंड डिमांड्स आर कॉन्शियस एफर्ट फॉर अराइविंग एट अ सोल्यूशन और अचीविंग अ सर्टेन गोल्स. ना कि नॉन वोल्यूशनल की तरह कि हमें देना ही है, मतलब वी डोंट हैव एनी चॉइस, बट यहाँ हमारे पास चॉइस है, हमारा मन है, देंगे, मन होगा तो वी विल नॉट गिव अटेंशन. वोल्यूशनल अटेंशन इज़ लेस स्पॉन्टेनियस. ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता, स्पॉन्टेनियस नहीं होता, ना ही ऑटोमेटिक होता है. यू हैव अ कंट्रोल ऑन इट, ठीक है. जिस पे कंट्रोल है वो वोल्यूशनल है, जिस पे कंट्रोल नहीं है दैट इज़ नॉन वोल्यूशनल. एग्जाम्पल्स होगा, कुड बी पेइंग अटेंशन वाइल सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम. आप मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप अटेंशन दे रहे हो, आपका नहीं मन है, यू आर लेटिंग इट गो.
Okay, you are letting it go. Attention focused on while answering examinations question. आपका अटेंशन फोकस करता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आंसर करते हो. अटेंशन कैन फर्दर बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स. ठीक है, नीड्स के बेसिस पे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे, जैसे कि सस्टेन अटेंशन, सेलेक्टिव अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन एंड अल्टरनेटिंग अटेंशन, विजुअल अटेंशन. So let's see the selective attention and sustained attention first. So ये जो वॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी है, ये क्लासिफाइड होते हैं बाय द रॉस ने किया था. फिर फर्दर क्लासिफिकेशन जो होता है वो किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स और सर्कमस्टांसेस, राइट. द फर्स्ट इज अवर सस्टेन अटेंशन. सो फर्स्ट इज सस्टेन अटेंशन, सेकेंड इज सेलेक्टिव. सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है? We will see that. So okay, it is the ability to pay attention to only one task by consciously concentrating on that task only for a long time enough and by avoiding all other forms of distraction or deviations. Sustained attention वो होते हैं जो लॉन्ग किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप बहुत देर तक अटेंशन देते हो. लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो यू आर गिविंग योर टाइम टू दिस वीडियो. आप भी सारा टेंशन आपका कहाँ पे है? इस वीडियो पे है, मेरे लेक्चर पे आप जो सुन रहे हो. सो यू आर गिविंग अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम किसी चीज़ पे दे रहे हो, अटेंशन कर रहे हो. दैट इज़ दी सस्टेन अटेंशन, राइट. सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इट इज़ द एबिलिटी टू पे अटेंशन टू ओनली वन टास्क. आप एक टास्क पे दे रहे हो ध्यान, दैट इज़ लिसनिंग टू दिस लेक्चर, consciously concentrating on that task only for long time enough and by avoiding all other forms of distraction and deviation. यही मैं वीडियो का एग्जांपल ले रही हूँ कि आप इस वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, एंड जितने भी आपके अकल बकल चीज़ें हो रही हैं, टीवी चल रहा है, या फिर आपके कोई पेट है वो आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर कोई भी अदर डिस्ट्रैक्शन है, मम्मी खाना बना रही है, वॉट एवर, आप अभी कहाँ पे अटेंशन दे रहे हो? इस वीडियो पर अटेंशन दे रहे हो. सो दैट इज़ सस्टेन अटेंशन. दिस काइंड ऑफ अटेंशन जो होता है, दिस काइंड ऑफ अटेंशन रिक्वायर्स अ गुड डील ऑफ फोकस. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस वीडियो पे. अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरा फोकस उस पढ़ाई पे होना चाहिए, एज वेल एज डिटर्मिनेशन. आप डिटर्मिनेशन मतलब यहाँ पे आप कितने उत्सुक हो पढ़ने के लिए, राइट. डिटर्मिनेशन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए फॉर बीइंग एबल टू कंसंट्रेट ऑन अ गिवन टास्क बाय कीपिंग अवे ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो. सस्टेन अटेंशन एग्जांपल्स कुड बी रीडिंग अ बुक. आप बुक पढ़ रहे हो, मेमोराइजिंग अ चैप्टर, राइट, और फॉलोइंग अ क्लासरूम लेक्चर. आप क्लासरूम लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन लेक्चर, या फिर आप यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हो. Selective attention. In this case, the listener chooses to pay attention to only specific stimuli which is present in the environment. This is a very important है क्योंकि selective attention पे questions पूछे जाते हैं. So in this case, the listener chooses to pay attention. Sustain के पास आप पूरा focus दे रहे हो, you don't have any other choice. अगर कोई मतलब अगर आपको पढ़ना है तो you will just study, and if you just want to watch a TV, watch a movie, then you would just watch a movie. But selective attention के साथ ये है कि you have choice. आप चूज़ कर सकते हो. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड यू थिंक क्या आपकी मम्मी ने आपके लिए बहुत टेस्टी सा फूड बनाया है, देन यू वुड स्टॉप दिस वीडियो एंड यू वुड गो एंड गिव टू दैट. आप फूड को अटेंशन दोगे कंपेयर टू दिस वीडियो. ओके, आप किसको अटेंशन दोगे कि मेरे को भूख लगी है, मैं खाने जा रहा हूँ, आई वुड वॉच दिस वीडियो लेटर. सो दैट इज़ द सेलेक्टिव अटेंशन, right? So listener chooses to pay attention to only a specific stimulus which is present in the environment while ignoring the other stimuli. यहाँ पे आपकी मम्मी थी जो आपके लिए खाना बना के लाई, and you said कि yes, I want to eat food rather than watching this video. So this kind of attention does not depend on stimulus but depends essentially on the attentive capabilities of an observer. जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये होगा कि वो उनका कितना कैपेबिलिटी है अटेंटिव, कितना वो टेंशन दे सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ आई एम रिमूविंग द हाईलाइट पार्ट बिकॉज पहले ही थोड़ी डल है ये पेजेस, सो आई डोंट वांट दैट.
The next is divided attention. Okay, in case of divided attention, the user pays attention to two or more tasks at the same time. आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, यू आर आप सोफ़ा पे बैठे हो, आप टीवी खोल रहे हो, लाइक यू आर वॉचिंग अ टीवी, एंड टीवी में आपका कोई भी नॉर्मल शो चल रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड आपके पास एक हाथ में रिमोट है, एक हाथ में आपके फ़ोन है, एक हाथ से आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, दूसरे एंड देन यू आर वॉचिंग वीडियो इवन द फोन, और द सेकेंड थिंग इज़ यू आर वॉचिंग अ टीवी. सो आप एक टाइम पे दो टास्क करते हो, दैट इज़ अ डिवाइडेड अटेंशन. सो लेट्स सी. In case of divided attention, the user pays attention to two or more tasks, right? Two or more tasks, and is also sometimes regarded as a multitasking, which involves juggling between two or more tasks, two or more than two tasks at the same time. Okay, it examples could be like texting somebody while attending a meeting. आप क्लासरूम में हो एंड यू आर ईटिंग योर फूड, एक हाथ से आप खाना खा रहे हो, दूसरे हाथ से आप अपने असाइनमेंट्स लिख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो द मल्टीटास्किंग. बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे उसके. डिवाइडेड अटेंशन यूजेस द मेंटल फोकस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. अब बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज़ करते हो, राइट, मेंटल फोकस. हेंस बिकॉज ऑफ डिवाइडेड अटेंशन द यूज़र मे गेट एग्जॉस्टेड. इसीलिए आप बहुत जल्दी थक भी जाते होगे, थक जाते हैं, राइट. अगर आप असाइनमेंट लिख रहे हो, साथ में साथ आप अपना एक यूट्यूब एडिट भी करना है, आपको वीडियो एडिट करनी है, लाइक देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ इट. आप अपने आप से सोचो, एंड वाइल राइटिंग द आंसर्स यू नीड टू राइट योर ओन एग्जाम्पल्स. तब आप और अच्छे से क्लियर होंगे सारी चीज़ें. द नेक्स्ट इज अल्टरनेटिंग अटेंशन. So this attention is closely related to divided attention, but it is different. In case of divided attention, we split our attention between two tasks, while in case of alternating attention, the entire attention is shifted from one task to another task, which is done or is done alternately. So यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो, अल्टरनेटिंग टास्क में क्या होता है, ये आप शिफ्ट करते हो. आपने खाना खाया, उसके बाद फिर से आपने मेरी वीडियो देखी, आप फिर पढ़ने बैठ गए, एंड यू सॉ माई वीडियो, यू सॉ माई लेक्चर. दैट इज़ द शिफ्टिंग, राइट. अल्टरनेटिंग अटेंशन, आप एक टास्क पूरा करने के बाद ही दूसरे पे जा रहे हो, राइट. दैट इज़ द अल्टरनेटिंग अटेंशन. अगर आप खाते खाते मेरे वीडियोज़ देखते हो, दैन दैट इज़ योर डिवाइडेड अटेंशन. एंड अगर आप खाना खा लिया, मम्मा ने अच्छा फूड बनाया था, यू ईटन, यू ऑलरेडी एट, एंड आफ्टर दैट आप पढ़ने चले गए, अगेन यू स्टार्टेड माई वीडियो, लाइक यू स्टार्टेड माई वॉचिंग. दैट इज़ द अल्टरनेटिंग अटेंशन. द नेक्स्ट इज़ विजुअल अटेंशन. यस, इट्स इम्पॉर्टेंट. विजुअल अटेंशन भी होती है, like visual attention makes use of a sensory organ like eyes for paying attention to certain details. अगर आपको कहा कि इस पेंटिंग को ऑब्जर्व करो, तो आपका सारा फोकस कहाँ होगा, यूजिंग योर सेंसरी ऑर्गन आई, उस पेंटिंग को आप ऑब्जर्व करोगे. येस, देयर आर लीव्स, द लीव्स आर विद दिस कलर्स इन दैट कलर्स, ठीक है. सो विजुअल पेज अटेंशन टू द डिटेल इनपुट विच आर रिसीव बाय द आईज ओनली एंड ब्लर्स आउट ऑल अदर स्टिमुलाई विच इज़ प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट. मैंने तो यहाँ पे एक उसकी बात की, पेंटिंग की, बट आप नॉर्मल डे में भी बात करो. विजुअल अटेंशन इज पुट यूज इन द केस ऑफ एडवर्टाइजिंग और रीडिंग. अगर आप एडवर्टीजमेंट देखोगे तो दे वुड हाईलाइट द मेन पार्ट, राइट. लाइक वीडियो जो वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, दे वुड हाईलाइट दैट. लाइक आपने देखा होगा कि फ्री 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 फ्री, सो दे हाईलाइट दैट. दैट इज़ अ विजुअल अटेंशन. एंड द नेक्स्ट इज, आई विल टेल यू. The next is auditory attention. This form of attention pays attention only to the sense of hearing only. अगर आप भीड़ भाड़ में कहीं खड़े हो एंड सडनली यू हर्ड योर नेम, किसी ने आपको बुलाया, राइट. सो आप सडनली अटेंशन जो कि ओह समवन कॉल्ड माई नेम, किसी ने मुझे बुलाया क्या, यू हर्ड योर नेम, राइट. दैट इज़ द ऑडिटरी अटेंशन. पेइंग अटेंशन टू द इंफॉर्मेशन, to the important announcement can be example of auditory auditory attention. Auditory and visual attention both function in conjunction with each other. दोनों एक दूसरे के साथ ही वर्क करते हैं, right. The next I would say, okay, so we have completed the types of attention. तो यहाँ पे एक मैं ऑर्डर बता दे रही हूँ, you would do that same way. उसी तरह आपको एग्ज़ाम में भी लिखना होगा. पहले आप अटेंशन के बारे में बताओगे. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन द अटेंशन मीनिंग. आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी लिख सकते हो, जो मैंने PDF अभी दिखाया, दैट इज़.
एंड द सेकेंड पॉइंट वुड बी योर रेफरेंस, जो मैंने बताया ना कि पर्सपेक्टिव दैट। थर्ड पॉइंट वुड बी द नेचर ऑफ अटेंशन, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अटेंशन। एंड द फोर्थ पॉइंट वुड बी द टाइप्स। एंड द लास्ट पॉइंट कैन बी डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, या फिर आप अपनी अकॉर्डिंगली ऑर्डर सेट कर सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू द परफेक्ट ऑर्डर। अब तो मैंने रैंडम बताया, आई विल टेल यू द परफेक्ट ऑर्डर। पहले आप डिफाइन करोगे, मीनिंग बताओगे अटेंशन की, देन रेफरेंस लोगे लाइक मैंने विलियम जेम्स का। द थर्ड पॉइंट इज़ कि आप नेचर बताओगे। फोर्थ इज़ डिटर्मिनेंट्स बताओगे, डिटर्मिनेंट जो भी मैं बताने वाली हूँ। द नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ अटेंशन इज़ द लास्ट। आप डिटर्मिनेंट्स पहले कर लो चाहे टाइप्स लास्ट करो, दैट्स अप टू यू। सो नेचर आपका डेफिनेशन और रेफरेंस के बाद ही आएगा, रिमेंबर दिस। नाउ द नेचर ऑफ अटेंशन, ओके। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ अटेंशन वर्क्स, अगर आपको ये जानना है कि अटेंशन काम कैसे करता है, then you need to and how it affects your perception and experience of the world. It's essential to remember a few important topics point about how attention works. Here are three aspects of attention, तीन aspect है, and we're gonna see one by one what are those, right? Limited, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा है दैट इज़ लिमिटेड। There has been a tremendous amount of research looking at exactly how many things we can attend to and for how long. Okay, so these are the highlighted parts, like pink color से मैंने ऐसे एडवर्टाइज कर रही हूँ, I have highlighted that. So three मैंने बताया ना, there are three aspects of attention. Let's see that. तो पहला है लिमिटेड। देयर हैज़ बिन अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिसर्च लुकिंग एट एग्जैक्टली हाउ मेनी थिंग्स वी कैन अटेंड टू, एंड कितनी देर तक हम लोग फोकस कर सकते हैं और कितने एक टाइम पे कितनी चीज़ों को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। की वेरिएबल्स दैट इम्पैक्ट आवर एबिलिटी टू स्टे ऑन टास्क इंक्लूड हाउ इंटरेस्टेड वी आर। इट डिपेंड्स से हम लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं उस पर्टिकुलर स्टिमुलस में, और हाउ मेनी डिस्ट्रैक्टर्स वी एक्सपीरियंस, और उस टाइम पे कितने सारे डिस्ट्रैक्टर्स आते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। अटेंशन इज़ लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ बोथ कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन, रिमेंबर दिस। अटेंशन इज़ लिमिटेड होता है दोनों ही, कैपेसिटी में एंड ड्यूरेशन में। द इल्यूजन दैट अटेंशन, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि द इल्यूजन दैट अटेंशन इज़ लिमिटलेस हैज़ लेड मेनी पीपल टू प्रैक्टिस मल्टीटास्किंग, कि कुछ लोग सोचते हैं कि अटेंशन इज़ लिमिटलेस एंड दे लिमिटलेस, और वो लोग एक टाइम पे बहुत सारे टास्क करते, दैट इज़ द मल्टीटास्किंग। Researchers has pointed out how multitasking seldom works well because our attention is in reality limited. हालांकि उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है मल्टीटास्किंग, बट इन रियलिटी इट इज़ लिमिटेड। सेकेंड इज सेलेक्टिव, राइट। सेलेक्टिव सिंस अटेंशन इज okay, it's only selective, not since selection. So selective since selection is limited resource, हमने अभी पढ़ा attention limited होते हैं in capacity also, in duration also. So since attention is limited resource, we have to be selective about what we do, what we decide to focus on. हमें बहुत से selective होना पड़ता है for our daily basis के लिए also and to study also, कि वह लिमिटेड होता है, इसीलिए हम लोग कुछ चीज़ों पे ही फोकस कर सकते हैं। ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड है तो यू वुड चूज़ कि इसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या किस पे पहले अटेंशन देना है। लाइक इफ़ योर एग्जाम्स आर नियर एंड यू वुड स्टडी rather than watching a movie. Okay. Selective since attention is a limited resource, we have to be selective about what we decide to focus on. Not only must we focus our attention on a specific item in our environment, but we must also filter out an enormous number of other items. As I said, अगर आपका एग्ज़ाम है, अगर आपके दोस्त बुला रहे let's have a party, let's do this, let's do that, no, आप क्या करोगे, इन इन्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपके घर पे शादी है, आपको पार्टी में जाना है, आपको दोस्त बुला रहे हैं, मूवी देखनी है, साइड बाई साइड आपके एग्जाम्स हैं, तो देयर आर सेलेक्टिव, आपको पढ़ना है, यू वुड चूज अ स्टडी ओवर दीज अदर थिंग्स. So we must be selective in what we attend to process that often occurs so quickly that we don't have even noticed that we have ignored certain stimuli in favor of others, right? तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम है एंड आपके फ्रेंड ने आपको किसी दिन कॉल किया एंड बोला लाइक एक हफ्ते का टाइम है,
आपके एग्ज़ाम है, आपके शादी घर है, आपके घर शादी है, फ्रेंड्स ने बुलाया, देन यू इग्नोर्ड क्या, आपके दिमाग से वो स्लिप हो गया कि मेरे को दोस्त को बताना है कि मैं नहीं आ पाऊँगा. सो दैट इज़ द सेलेक्टिव. आपके माइंड से स्लिप क्यों हुआ? बिकॉज यू वर ऑलरेडी अटेंडिंग सेवरल अटेंशन. आपको पढ़ाई करनी थी, घर की शादी थी, यू हैव टू इवन अटेंड दैट ऑल्सो. सो थोड़ा टाइम बाद दिया, एंड यू आपने मैनेज किया. सो दैट इज़ अ सेलेक्टिव अटेंशन. ओके, so I'll repeat it once again. कि we must be selective in what we attend to. A process that often occurs so quickly that we don't even notice what we have ignored certain stimuli in favor of others. Third point is part of cognitive system, right? Part of obvious सी बात है. Attention जो है, that is the part of, right? It is the attention is a basic component of our biology. obvious सी बात है, ये हमारे दिमाग का है, तो दिमाग में obvious सी बात है attention तो हम देते ही हैं. So attention is a basic component of our biology, present even at birth. Yes, by birth, of course. कैसे? Let's see that. Our orienting reflexes help us determine which events in our environment need to be where I was कि basic component of our biology present even at birth. Our orienting reflexes help us to determine which event in our environment need to be attended to. किसे में attention देनी है, किसे नहीं देनी है. A process that helps in our ability to survive. ठीक है, ये process हमें help करता है to survive. Like newborn attend to environment stimuli such as loud noises. अगर छोटे बच्चे infants हैं, I said infant है, और अगर वो किसी शोर वाली जगह जाते हैं तो दे क्राई, क्योंकि स्टिमुलाई उनके बगल ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि वो लाउड नॉइस उनके रोने लगते हैं. अ टच अगेंस्ट द चीक ट्रिगर्स द रूटिंग रिफ्लेक्सेस causing the infant to turn his or her head to nurse and receive nourishment. right? ठीक है, ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट है. दिस कि अगर आपने एक इन्फेंट है, उसको आपने अगर उसके चीक्स को सो क्यूट बेबी, ही वुड डेफिनेटली गिव यू अटेंशन. क्या क्या, क्योंकि नरिशमेंट के लिए, एंड ऑल्सो ट्रिगर कर जाते हैं कि या हु इज़ दैट, एंड स्टार्टेड क्राइंग एंड ऑल. सो दिस ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस कंटिन्यू टू बेनिफिट अस थ्रू आउट द लाइफ होता है. राइट? द हॉन्क ऑफ अ हॉर्न माइट अलर्ट अस अबाउट ऑन कमिंग कार. ठीक है, अगर आप कार चला रहे हो एंड अगर बगल आपको हॉर्न की आवाज़ आ रही है पीछे से दूर से, then you would obviously alert हो जाओगे कि yes, the car is coming. The smell of smoke might, and the next example is very familiar and similar in everyone's house, I hope. The smell of smoke might warn you that the milk pan you put on a stove is burning. अगर आपको जलने की स्मेल आती है, you would think कि yes, हमारा मिल्क जो है वो बर्न हो चुका है. right? That is the example of attention. okay, these are the जो अभी मैंने जितनी भी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, that is the nature of attention. All of these might stimuli grab our attention and inspire us to respond to our environment. Now the second part is determinants of attention, right? So it's very important, and it's this part, like determinants of attention is very scoring. I assure you this, that yes, this is very scoring. अगर आप ये एग्ज़ाम में लिख के आओगे, यू वुड डेफिनेटली स्कोर मार्क्स. आपको 20 में से 20 मिलना ही मिलना है. अगर कुछ एग्जामिनर्स नहीं देते तो दे वुड गिव यू 18 और 17. ओके, सो वन ऑफ द टू टाइप्स इज एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स. सो इन एक्सटर्नल, these conditions are generally those characteristics of outside situation or stimuli which make the strongest help for capturing our attention. right? So यहाँ पे ये कह रहा है कि लाइक आई विल टेल यू कि जो अटेंशन है, अगर आपको किसी का अटेंशन पाना है या फिर किसी का अटेंशन देना है, या यू गिविंग अटेंडिंग समवन, तो देयर कैन बी ओनली टू फैक्टर्स. चाहे एक्सटर्नल होंगे आपके इन्वायरमेंट में, चाहे इंटरनल होंगे आपके खुद के ब्रेन में. ओके, सो द फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द स्टिमुलस. So the nature of the stimulus. So all types of stimulus are not able to bring the same degree of attention. right? अगर एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई लाउड नॉइज़ आपके टेंशन को ग्रैब कर रहा है, इट डजेंट मीन कि कोई ब्यूटीफुल, कोई क्रैकी साउंड. ओके, लेट्स टेक दिस एग्जांपल.
कोई क्रैकी साउंड आपको यू आर ग्रैबिंग अटेंशन, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग बाय इट, इट डजेंट मीन एक छोटी सी बहुत धीरे सी आवाज़ आपका अटेंशन ग्रैब करेगी इन अ क्राउडेड रूम, रादर देन एक माइक की जो आवाज़ आती है सन से, वो आपको ज़्यादा ग्रैब करेगी अटेंशन कंपेयर टू कि क्राउड में कोई छोटी सी आवाज़, आप किसी फ़ोन की रिंगटोन आपको सुनाई दे रही, वो कि दैट टू इन द वेरी छोटी सी, मतलब बहुत ही धीरे आवाज़ में है. सो आई होप यू गॉट दैट एग्जाम्पल. सो all types of stimuli are not able to bring the same degree of attention. It's clear by this example. A picture attracts attention more readily than words. इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ लर्न करो, यू शुड इमेजिन इट, उन्हें पिक्चराइज करो, राइट? So attention grab करेगा and it would help you to concentrate more and learn more. Among the pictures of a human being invite more attention, and those human beings are related to beautiful women or handsome men who attract more attention. Obviously बात है, अगर आप पार्टी में जाते हो, if you find someone really attractive, जैसे कहते हैं, you would definitely grab his attention, right? आप उसको attention दोगे, या फिर अगर आप बहुत beautiful लग रहे हो, you would definitely grab attention. Second point is कि तो that is the nature of the stimulus. If you found this video really like आप इसे attention दे रहे हो, and if you find yes this video is very informative and I should share with my friends, right, ताकि इस वीडियो को और ज़्यादा attention मिल सके. So that is also the nature of stimulus. This video is work as a stimulus to your brain. Okay, let me turn this into the next page. And also you can take screenshot of this PDFs, and if you really want, I would pin the PDF into the description box as well, and you can take screenshots in the midway if you really want. Okay, so where I was, yes, this topic attracts more attention. कौन ज़्यादा करता है? A handsome man and the beautiful woman. So इस वे में देखें, so in this way an effective stimulus should always be chosen for capturing maximum attention. इसीलिए कहा जाता है you should always dress well, informals also and informal also, not to एक negative way में attention grab नहीं करना, but it builds a personality, right? Let's not get into that topic and chapter as well. So where I was, कि intensity and size of the stimulus. In comparison with the weak stimulus, the immense stimulus attracts more attention of an individual. ओके, तो वही म्यूज़िक वाला साउंड ले लो, क्रैकी साउंड ले लो, एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ फिर से. अवर अटेंशन बिकम ईजली डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ लाउड साउंड, अ ब्राइट लाइट और अ स्ट्रॉन्ग स्मेल. ठीक है, एंड अटेंशन इज ऑल्सो ग्रैब थ्रू आवर 5 सेंसेस, हमारी हमेशा वर्क करती हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट वी ऑलवेज टेंड टू अटेंड मोर. ठीक है, अ ब्राइट लाइट और अ स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड ऑल्सो अ लार्ज बिल्डिंग विल बी मोर रिडीली अटेंडेड टू देन अ स्मॉल वन. द नेक्स्ट इज कंट्रास्ट, change in variety. Change in variety change in variety strike attention more easily than sameness and absence of change. Example, we do not notice the, so I was telling you about the contrast, change and variety. Change and variety strike attention more easily than sameness and absence of change. Example, we do not notice the tickling sound of clock put on the wall until it stops ticking. Sorry, I was saying tickling, but it's ticking. We do not notice the ticking sound of a clock put on the wall until it stops ticking. हम रूम में शांति से बैठे हो, if you are watching this video and not watching this video, if you are just reading a book also, then अगर आपको पीछे टिक 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 आवाज़ आ रही है, then suddenly अगर वो stop हो जाए, आपका attention जाएगा, something has been stopped now. क्या रुका है? You would just stare everywhere and be like, oh, clock sound. So that is the contrast, change and variety. We do not notice the ticking sound of a clock put on the wall until it stops ticking. That is any change in the attention to which you have been attracted immediately capture your attention. The factor, यहाँ पे जो factor बताया, the factor contact यहाँ पे contrast होगा. The factor contrast or change is highly responsible for capturing the attention of the organism, contribute more than intensity, size और nature of the stimulus. ठीक है, जो contrast, change in variety, जो कलर है, ये ज़्यादा आपको अटेंशन आप दोगे कंपेयर टू व्हाट? इंटेंसिटी, साइज और नेचर ऑफ द स्टिमुलस. फोर्थ वन इज रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस. ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक चैप्टर रोज़ पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे,
you would give more attention and great importance to that particular chapter. Like repetition is the factor of great importance in securing attention, because one may ignore a stimulus at first instance, but if it repeated over several times, it captures our attention. Example: a misspelled word is more likely to be noticed if it occurs twice in the same paragraph than it is occurs only once. While giving the lecture, the important aspects of the speech are often repeated so that the attention to the audience can be easily directed to the valuable points. Okay, I'm giving you the very good example of this also. अगर आप ऐसा कि अगर एक चीज़ बार बार करते हो आप, जैसे कि आपको ये नोटिफिकेशन इस वीडियो की जाती है एंड यू वुड इग्नोर इट, राइट, बट ये नोटिफिकेशन बार बार गई कि ओके यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, then you would definitely give this video an attention, right? It is a repetition of the stimulus. ना ही सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के साथ होती है, बट ऑल्सो विद द मिस स्पेल्ड वर्ड इज मोर लाइकली टू बी नोटिस्ड. कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, कोई मिस स्पेल्ड वर्ड है, एक बार गलत पढ़ा, ठीक है, बार बार पढ़ा तो बार बार यू वुड नोटिस इट. वाइल गिविंग द लेक्चर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पीच, इसीलिए बार बार एक ही पॉइंट को बोला जाता है, लिखा जाता है, राइट? दैट इज द रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस. द नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस. The moving stimulus catches our attention more quickly than a stimulus that does not move. आप छत पे हो अपने, you're on the terrace, you're on the rooftop पे हो, and then you find suddenly एक plane जा रही है, या फिर एक suddenly एक bird गई, you would notice, hey, what was that? You would give attention to that. अगर आप क्लास में बैठे हो, टीचर इज गिविंग द लेक्चर, एंड अगर आप यहाँ पे भी मेरी वीडियो देख रहे हो एंड सडनली कोई आपके बगल से गया, राइट, समवन passes away from you, or you would heard some noise, you would give attention. Oh, what was that? That is the movement of the stimulus, right? We are more sensitive objects that move in our field of vision. Example: advertisers make use of this fact and try to catch the attention of people through moving electric lights. The next is internal. ये सारे एक्सटर्नल में थे. सो एक्सटर्नल में क्या क्या थे? एक्सटर्नल में हमारे थे नेचर क्या होगा, इंटेंसिटी, साइज, कंट्रास्ट, चेंज, वैरायटी, रिपीटिशन, मूवमेंट. 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यू वुड राइट एंड यू वुड डेफिनेटली स्कोर अ गुड मार्क्स इन दिस. द नेक्स्ट इज इंटरनल और सब्जेक्टिव, राइट? इंटरनल या फिर सब्जेक्टिव. These factors predispose the individual to respond to objective factors, to attend to those activities that fulfill his desires, motives, suit his interest and attitude. It is the mental state of perceiver. यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल में आपके इन्वायरमेंट में कैसे स्टिमुलस थे उन पे फोकस किया गया था, बट यहाँ पे आपके इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस किया जाएगा. व्हाट यू थिंक, व्हाट आर योर डिज़ायर्स, व्हाट आर योर विश, व्हाट आर योर वांट्स, what are your motives, what are your interest and attitude, which is very important. Interest बहुत ज़्यादा important होता है to be the part of attention, right? अगर आप किसी चीज़ को attention दे रहे हो selectively, then आपका उसमें interest होगा, तभी आप उसमें attention दे रहे हो, right? अगर आपको इस psychology में, इस subject में interest है, then only you are watching this video and you are giving attention. अगर आपको इस पे interest नहीं है, then why would you watch? It's easy going and simple. So let's go right now. Interest. पहली चीज़ ही मैंने कहा कि interest. Okay. So interest is said to be the mother of attention. As I have said earlier, interest होना चाहिए. We attend to objects in which we have interest. We would like to watch a movie or a serial in TV because we are interested in the object. Sorry, we are interested in the subject around which which the movie or serial revolves. In any get together, if any subject of our interest is discussed that attracts our attention easily and makes to participate in the discussion, in our day-to-day life we pay attention to the stimulus we are interested in. Okay, as I said earlier कि interest आपका बहुत important होता है. It is the mother of attention. The next is motive. Our basic needs and motives to a great extent determine our attention. राइट, हम किस मोटिव से हैं, राइट, जो बेसिक नीड है. अगर आपको कहते हैं ना लोगों कि मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रही है पढ़ने की, देन दे वुड से दैट यू नीड टू रियली कंसंट्रेट ऑन, यू नीड टू डू द मेंटल एक्सरसाइज. मोटिव्स, किस मोटिव से कर रहे हो, राइट, क्या सोच के किया हुआ है, कुछ बेसिक गोल होंगे, देन ओनली आवर बेसिक नीड्स एंड मोटिव्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट determine our attention. जैसे थर्स्ट, आपको प्यास लगी, आप जाओगे पानी पियोगे. इफ़ यू आर हंग्री यू विल ईट फूड. इफ यू आर एंड सेक्स एंड क्यूरियोसिटी. सेक्स इज ऑल्सो गिवन because that is by the species for the future generation.
That is also curiosity, fear are some of the important motives. So one, two, three, and there are many motives, right? And अगर आप graduation में हो, so these words, I hope you won't get uncomfortable with these words. You need to, if you're a psychology student, you need to, this जैसे कि sex words आता है, people like, oh my god, that is so sex word is used in studies, oh my god, there's nothing like that. आप psychology के student हो, so you must be familiar with these words. Okay, so and the next is mindset is very important. Person's readiness to respond, आप कितना ready हो उस particular interest और particular एक्टिविटीज़ को करने में, आप कितना रेडीनेस हो, कितनी आपके अंदर रेडीनेस है टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़, कितने आप कॉन्फिडेंट हो, रेडी हो टू परफॉर्म ऑन द स्टेज. दैट इज़ द माइंड सेट. It all depends on your mindset. So, person's readiness to respond determines his attention. If we are expecting a stimulus, occurrence of that stimulus along with the many other stimuli may not come in the way of attending to that particular stimulus. अगर आपको एक डोमिनोज में आप बैठे हो एंड इफ यू वांट ईट पिज़्ज़ा देन यू विल डेफिनेटली, आप इस माइंड सेट से गए हो कि मैं ये पिज़्ज़ा खाऊंगा. आपके अगर कितनी सारी चीज़ें डिशेज होंगी, नो यू वुड ईट पिज़्ज़ा ओनली. ओके, सो दैट इज़ द माइंड सेट. ओके, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया. एट द टाइम्स व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग द एग्जामिनेशन टाइम टेबल बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर द टाइम टेबल पुट आउट ऑन द नोटिस बोर्ड अलॉन्ग विद द अदर नोटिस वुड अट्रैक्ट द अटेंशन ईजिली. इजी एग्जाम्पल है आपके डे टू डे लाइफ में, यू वुड एक्सपीरियंस दिस थिंग्स, राइट. So next is mood and attitude, very important. When we attend to its influence by the moods and attitudes, right. So अगर आप angry होते हो, when you are disturbed or angry, we notice the smallest, आपको smallest mistake भी अदर्स की बहुत ईजिली दिख जाती है. अगर आप गुस्से हो तो आपको हर जगह ऐसी चीज़ दिखेंगी जो आपको एकदम इरिटेट कर देंगी. लाइकवाइज अगर आपके फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एटीट्यूड ऑल्सो डिटरमाइंड आवर अटेंशन. अगर आप खुश हो तो आपको हर चीज़ें अच्छी लगेंगी, अगर आप दुखी हो तो आपको हर चीज़ें दुखी लगेंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा. यू वुड फील सैड, यू विल सोबर. या आफ्टर डिस्कसिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स वी रियलाइज दैट दीज फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड. ये सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड हैं, राइट. अगर आपका इंटरनली इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, एक्सटर्नली यू वोंट फाइंड एनी हैप्पीनेस. ऑब्वियसली बात है, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, आप बाहर आपको कितनी भी खुशियाँ दे दी जाए, आप खुश नहीं रहोगे. आप अगर अंदर से अपने खुशी को अटेंशन नहीं देते हो, बाहर जितनी भी खुशियाँ आपको दी जाए आप उस पर अटेंशन नहीं दोगे. दैट्स वाई इट्स स्टेटेड इट इज़ इंटर रिलेटेड, राइट. द नेक्स्ट